Jai Hind everyone, myself Pragati Pandey, your bio teacher, and I'm here with a new video of chapter 2 reproduction. So in reproduction, earlier we have studied the pollination, then after self-pollination, cross-pollination, agents of pollination, these things we have already discussed. Okay, now we will discuss some other topics of this chapter. Okay, so basically we will go through a quick revision of the chapter, then after move to our topic, that is fertilization in plants. Okay, before that we will see the artificial pollination methods, then after we will conclude our topic, that is fertilization in plants. Okay, so basically we was here on, we have to start that artificial pollination. Before that we will revise the chapter. Okay, so let's revise quickly. Our chapter is reproduction. Okay, so reproduction is basically of two types: asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction occurs in animals and plants both. In animals, basically it occurs with the help of budding and binary fission, whereas in plants it occurs with the help of spore formation, fragmentation and vegetative propagation. Okay, after that we have discussed the asexual reproduction. Asexual reproduction is that in which only one parent is involved and the offspring are basically the identical or clones of their parents. Okay, in binary fission the parent usually divide into two daughter cells. Okay, whereas in budding the parent has a outgrowth which is called bud, and after some time the bud detach from the parent and develop into a new individual. Okay, now we have discussed fragmentation. There is a parent which is divided into several fragments and each fragment develop into individual organism, that is fragmentation. Then after we have discussed spore formation. In spore formation we have seen that there is a plant fungus on which basically it occurs in non-flowering plants. In this the plant has a sac-like structure in which numerous spores are there. When this sac bursts, the spores spread into the environment and in the favorable condition they develop into a new organism. Then after we have seen the vegetative propagation. In that the stem, leaves and roots of the plant give a new plant. So in natural vegetative propagation there are two methods for vegetative propagation. One is natural and another is artificial. In natural we have seen the propagation by leaves, whereas which has the example of bryophyllum leaf, in which we can see that the leaf margin have numerous buds which can grow into a new individual. Then after we have seen the root, that is sweet potato. The sweet potato, one tuber is detached from the plant body, the root is detached from the plant body and then it is planted and a new plant is formed. Okay, but in whereas in stem we can see that the potato, this is the stem in which the food stored is present. When in the favorable condition they have bud like outgrowth. When these stem are planted, a new or plant organism is found. Whereas in bulb you can see that it is also the condition of stem in which the stem is bulb like structure. When they are planted, a new plant can be found. Whereas in rhizome, each node and internodes have outgrowth. Okay, and each node and internode develops a bud which can be planted and give rise to a new plant. Whereas in corms, it is also the stem part, swallow and base of the stem which has nodes, and they can also be planted which give rise to a new plant. Whereas runners, in which the long stem of the plant is grown and
when detached from the body, a new plant is formed. Okay, then after we have seen the advantages and disadvantages. You have answered very well in the question hour. Now artificial vegetative propagation, in that we have seen layering, grafting, cutting and tissue culture. In layering, you know, the stem of the plant or long stem of the plant or long branch of the plant is layered onto the soil and a new plant is grown. Whereas in cutting, we cut the plant and the detached part is grown up, it gives rise into a new plant. Whereas in grafting, we basically use two types of plant and cut it, then after we join it and a new plant is formed which has the quality of both the plants. Then after tissue culture, it is the artificial method of growing plant in which we give proper nutrient, proper medium and we develop a new plant. Okay, then after we have gone through the tissue culture, then after sexual reproduction. In sexual reproduction, the colored part of the flower is corolla or petals and the green part is sepals or calyx. Okay, the whole flower is present on the receptacle. The flower is attached to the plant body with the help of pedicel. These things we have seen, and we have seen the pistil, we have seen the gynoecium, endoecium, stamen, carpel. All these things we have already discussed. Self pollination, cross pollination, basically transfer of pollen grain from anther to the stigma of female flower, female reproductive system. These things we have discussed, the pollination. And now we will start the agents of pollination. It is also completed. Pollination by insect we have seen, then after pollination by wind, then after pollination by water. These were the agents and we have gone through this point. Okay, so let's see the artificial pollination. Sometimes pollination is carried out by external or artificial methods, hence it is called artificial pollination. Basically, till now we have seen that the pollination was occurring with the help of insect, water, these things, by wind. These are what? These are natural methods. These are natural methods to do the pollination. These are the natural method because nature is responsible for the pollination. Now here the artificial, basically in this the pollination is carried out by external method. जैसे कि अगर हम हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है. हम क्या कर रहे हैं, ढेर सारे प्लांट्स को हमने प्लांट किया, हमें पॉलिनेशन कैरी आउट कराना है, तो हम पॉलन को एक जगह से इकट्ठा करें, उसको स्टोर करें और ले जा करके फीमेल फ्लावर पे, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर पे हम ले जा करके उसको ड्रॉप कर दें. तो ये क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मेथड हो गया. In this process, the pollen get transferred from one plant to another, causing pollination and in turn fertilization occurs. Basically, pollen को transfer किया जा रहा है. In some countries, most crops are artificially pollinated. Basically, in several countries, the pollination is usually done by the method of artificial pollination. During artificial pollination, flower of desired characteristics are selected. Basically हम क्या करते हैं, artificial pollination में मान लीजिए कि कोई प्लांट है, उसका फ्लावर था, तो हम तो पहली चीज़ हम उसको प्रिवेंट करेंगे नेचुरल चीज़ों से, दैट इज़ इंसेक्ट, विंड, इन सब चीज़ों से हम उसको प्रिवेंट करेंगे. क्योंकि हमारा फीमेल फ्लावर है, अगर हम उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे तो कोई नेचुरल एजेंट उस पर कर देगा, पॉलिनेशन हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, पहले जो फीमेल फ्लावर है हम उसको बैग में बंद कर लेते हैं, पॉलीथीन से बंद कर देते हैं, उसको पैक कर देते हैं, जैसे कोई एक्सटर्नल एजेंट उस पर ना आ पाए. फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें रोज़ चाहिए या हमें कुछ भी, मतलब
हमारे पास ग्रीन गुआवा है और हमें रेड गुआवा हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रेड गुआवा का जो पार्ट होगा, मेल प्लांट होगा या जो भी प्लांट होगा, हम वहाँ से उसका पॉलन लेंगे और हमने जो हमारा ग्रीन गुआवा का जो प्लांट है उसका जो फ्लावर है हमने उस पर पॉलीथीन बांध दी है, इसलिए कि उस पर दूसरा कोई कीड़ा या कोई दूसरा इंसेक्ट कोई अलग तरह का पॉलिनेशन ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे, जिस वैरायटी की चीज़ें हमें चाहिए, जो भी वैरायटी हमें चाहिए वो वाला पॉलन हम लाएंगे और हम उस फ्लावर पे छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हम डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का प्लांट पा सकते हैं। आर्टिफिशियल मेथड से हम अपनी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का प्लांट पा सकते हैं। इसमें फ्लावर को सबसे पहले तो पैक कर दिया जाता है पॉलीथीन से, अभी उसमें कोई भी पॉलन नहीं आया है, मतलब वो फीमेल फ्लावर था उसमें अभी कोई भी पॉलन नहीं आया है। हम अपनी डिज़ायर का पॉलन लाते हैं और उस फ्लावर पे हम छोड़ देते हैं, फिर फर्दर वो स्टिग्मा पे स्टिक होता है और स्टाइल के थ्रू ओवरी तक जाता है और वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, ड्यूरिंग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन फ्लावर ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेलेक्टेड, the pollen from the anther are then dusted on the stigma of the different plant. The pollinated flower are then covered or secured with polythene bags so that the flower do not get pollinated by other agent. So हमने बताया कि हमने डिज़ायर्ड पॉलन लिया, उस फीमेल फ्लावर पे जो हमने पॉलीथीन बांध रखी थी उस पे हमने हमारे डिज़ायर्ड पॉलन को छोड़ने के बाद हमने फिर से उसको पैक कर दिया कि कोई एक्सटर्नल एजेंट उसको पॉलिनेट ना कर पाए। क्योंकि मान लीजिए कोई फ्लावर है उस पे हमने अपना डिज़ायर्ड पॉलन दिया और हमने उसको खुला छोड़ दिया, कोई हनी भी थी वो कोई दूसरा पॉलन लेकर के आई वहाँ पे छोड़ी और स्टिग्मा के पास दोनों टाइप के फ्लावर उसके पास प्रेजेंट थे, लेकिन वो एक्सेप्ट किसको किया, हमारे वाले को या इंसेक्ट वाले को, ये मैटर करता है। तो इसलिए हो सकता है वो उसको सेलेक्ट कर ले तो हमारा ये सारा मेथड हमारा फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन कराने के बाद पॉलन को वहाँ पे छोड़ने के बाद, फ्लावर पे छोड़ने के बाद हम फिर से उसको पैक कर देते हैं। ओके, द फ्लावर इज़ केप्ट इट एज इट इज़ टिल फ्रूट्स एंड सीड्स आर डेवलप्ड। और उस फ्लावर को हम तब तक पैक्ड रखते हैं जब तक वहाँ पे सीड और फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। द सीड्स आर देन टेकन एंड सोन इन द सॉइल, फिर वहाँ से वो सीड्स ली जाती हैं और सॉइल में ग्रो की जाती हैं और हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का प्लांट मिल जाता है। ओके, नाउ हियर इट इज़ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. The fusion of male and female sex cell is called fertilization. Basically, what is fertilization? Fertilization is simply the fusion of male and female sex cells or gametes. Okay. So we have the male sex cell is pollen grains, and we have the female sex cell is ova, that is ovum. Okay, which is present in our ovary. After the pollen grain are deposited on the stigma, the process of fertilization begins. क्या होता है? Stigma style ovary. हम स्ट्रक्चर देखेंगे. You can see here, you can see this stigma style ovary and in that ovule is present. तो जब pollen grain इस स्टिग्मा के अपर पोर्शन पे आकर के इकट्ठा हो जाता है, वहीं से हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है. यहाँ पे आप फिगर को देखते रहेंगे, आप देख रहे हैं पॉलन थे, पॉलन आ करके यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं. सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हम देख रहे हैं हियर द पॉलन्स आर stick to the stigma portion. You can see here the pollen is there, and when the pollen is present here, there is a tube in the style, and this pollen enters into the stigma by the style and
go to the egg cell, that is go in the ovule and fertilize with the egg cell. Here is the egg cell. Here you can see that this is the egg, you can see. फिर क्या होता है, पॉलन जो होते हैं वो स्टिग्मा पे आके स्टिक कर जाते हैं. आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉलन जो है स्टिग्मा पे आके स्टिक कर गए हैं. 3 दिख रहे हैं इसमें. और इसमें जो पॉलन स्टिग्मा की लेयर को डिज़ोल्व करके अंदर जा पाएगा वो गया है और फर्दर वो एग सेल में जा करके एग सेल से फर्टिलाइज़ किया है. सो बेसिकली क्या होता है, जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स आके इकट्ठा हुए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाती है. फिर क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. ये जो आप देख रहे होंगे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है और इस ट्यूब के थ्रू पॉलन एंटर कर रहा है ओव्यूल में और वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होता है. Fertilization takes place in the carpel, which is a female reproductive part of the plant. The pollen grains begins to germinate in the stigma. Basically, pollen जैसे ही अंदर गया वहाँ पे उसका fertilization हुआ. Basically, fertilization female reproductive part में हो रहा है. सिर्फ pollen male part से आ रहा है अंदर female part में और वहाँ पे उसका fertilization हो रहा है. A pollen tube begins to emerge and grow from the germinated pollen grain. आप देख रहे हैं यहाँ पे pollen tube का फॉर्मेशन हुआ है. जैसे ही वो स्टिग्मा पे आके स्टिक होता है वहाँ पे वो pollen ब्रेक होता है, जर्मिनेट होता है और pollen tube का फॉर्मेशन करता है और उस pollen tubes के थ्रू pollen अंदर जाते हैं. A pollen tube begins to emerge and grow from the germinated pollen grain. The pollen tube moves toward the ovary and enters the ovary from a small orifice. Though through this pollen tube, the male gamete has now reached the ovule to fuse with the egg cell or ova inside the ovary. Basically, pollen tube के through pollen अंदर गया, egg cell से वो fertilize किया. Once the process of fertilization is complete, जब fertilization की process complete हो जाती है उसके बाद जो एग होती है वो फर्दर डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, बेसिकली फर्टिलाइजेशन इज़ व्हाट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन and fertilization result into the formation of zygote and further the zygote develops into embryo. Okay, तो क्या होता है प्लांट्स में, ओव्यूल जो होता है वो सीड बनते हैं और जो ओवरी होती है वो फ्रूट्स बनती है. ओके, द ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू fruit. Here we have completed our this topic. Now in the next lecture we will see the sexual reproduction in human being. Okay, so your assignment work is explain fertilization in plants and artificial pollination. This is your assignment work. Comment on artificial pollination and explain the fertilization in plants. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.